Hello and welcome again. Day आजकल कितना है? Day 77 of my live stream challenge, where I'm streaming for like 365 days, and then there is something that I need to decide after that. I don't want to repeat this every time I stream, so like you guys can watch other streams to figure out what I'm doing here. I should probably write it in the description, like maybe, so that everyone can read the same story every time, I guess. But basically speaking, this is a challenge to myself and a way of like staying a little bit productive, a little bit being able to like face the camera, being able to communicate, a lot of things basically. Overall, something that I'm doing for my self-improvement and betterment, I guess. Let's start with like figuring out why my streaming sometimes loses bitrate. So I was not planning to stream today with Kick platform as well, because I'm not seeing any benefits. Like I did get like a few viewers, like a lot of the times, but they were all spam accounts. So I'm not sure if it's worth it at least at the moment. So I will stream on Kick as well, but I think on that platform I'll probably only stream when I'm gaming, maybe, or maybe when I'm watching some sort of content and streaming like reaction videos and stuff. So I'm losing some bitrate over here. Like I stream at like 12,000 kilobits per second for YouTube, and then for Twitch it is 8,000 kilobits per second, but it is struggling right now. So I would like to like figure it out why that happens. And to do that, let's bring OBS on the front, I guess, and let's try to figure it out. So I'll look at the stats provided by OBS. Detailed stats, where is it? I know that they provide a complete data somewhere. View stats. I guess let me show you guys by sharing my screen, maybe what is happening. We'll try to understand together. So the CPU usage, as you can see, is 5.2%, obviously not enough. Average time to render is 2.5 milliseconds, good enough. Memory usage is good enough. Skip frames due to encoding lag. Okay. Frame missed due to rendering lag. It's like fluctuating. It's not consistent. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Like
For example, I didn't face this issue at all, like on multiple streams, even while gaming, by the way, which is very intensive task. Right now I'm only using a few browsers and I'm on streaming, basically browsers, few softwares and streaming. So this should like work perfectly, but still I'm getting some sort of errors. Let me look for some possible data about this. Not chess. We played chess yesterday, so that's why. So I'll read some, I guess, documentation stuff about this, which could be boring, but I have to understand. From what I can understand, this is probably like an encoding issue, but let's try to like figure it out via real information instead of just guessing. Explain OBS stream stats. Status indicators and what they mean. Status indicators. Dropped frames. Okay. Primary cause of drop frames. Personal network connection upload speed is maxed out. Your internet server is having connection issue on their network. Okay. The streaming platform's ingest server is having issue. I think this is the most common issue because like it doesn't happen every day. Missed due to rendering lag. Okay. Missed due to rendering lag. It's very low, so GPU is capable of handling it. I'm reading about, should I share this? I think if I'll share my browser, it will be confused because like multiple windows, I'm using multiple windows. Let me like converge this, merge this into one before doing so. Okay, now we have a single window and it shouldn't be confusing. So this is one of the resources that I found, and if you like read this, then primary causes of rendering lag. Okay. Dropped frames. OBS Studio encoded and sent over the network. Okay, for example, stream to H1 dropped frames go. This message did not receive frames sent by OBS Studio. Okay. Like for example, again, my stream is smooth right now, so it's confusing. The primary reason for frames are related to the internet connection between your computer and the server you're sending videos to. My internet speed is fine. I regularly test it. Like with the automation, I guess I can show you guys. So I use Home Assistant
those who use it will understand what I'm saying. And there is an automation that I run after every 30 minutes. So like if you look at the data, I don't know if it will be visible or not. It's in dark mode, so probably not. Okay, it's somewhat visible. So I can see like the dips are very rare. It happens, but very rare. So this automation that I've created using like my Raspberry Pi and Home Assistant, so you can see that the internet drops happens like very less, not very often, and I'm keeping track of the internet connection every day. Basically every 30 minutes it automatically speed test speed test event occurs, which like captures the data, and then like I keep it. And download speed is even more stable, as you can see. So yeah, it's not like internet related issue, I think, prominently at least. And even the ping, in terms of ping, I do think like maybe sometimes it's a little bit higher, but it's still not low enough to like cause issue, like as you can see. So this fluctuates a little bit more compared to like this speed, download speed and upload speed, but still not low, high enough to like cause serious issues. So I can only like see about 4 peaks on this graph, and the highest peak that I got was 100 millisecond, which is high but not too high to cause extreme issues. क्या हाल है भाई? बढ़िया. लेट हो गया. नहीं मैं 15 सो इस ओ आपका क्या? मैं 10-15 से ही स्ट्रीम कर रहा हूँ. आराम करो फिर, बढ़िया घर पे. So I don't think it's like related to internet. Like, let me share the screen. I guess let me first confirm that I'm not sharing anything. Okay. So what I'll do is I'll move this screen over here. Okay. Okay, it's fine. Let me share this. So as you can see, let's keep it here. The most likely issue is happening, like, I guess, in terms of connection between the server, main server, which is YouTube and Twitch in this case. And Twitch is better, by the way, and since Twitch allows us to choose multiple server, so even when you like get issues, you can like switch immediately between our different server, so which is very helpful when streaming live. But on YouTube, like, it is automated and you cannot choose a particular server that is like doing great, so not much I can do about it. I have to rely on like YouTube server to like decide the best possible connection. गुस्सा हो गया क्यों? Maybe frustrated a little bit, but not. Average time to render frame is still fine. Frames missed due to rendering lag. So the rendering lag is supposed to happen because of the GPU, okay? And it happens a little bit, as you can see. It's still not high enough to like cause a lot of issues.
how about using this as well? Hola, amigo. Trata para tener sigues los dos yo te digo y tú me sigues trato. Me gustaría ser youtuber. Hola, Pepino especial. Mucho gusto. ¿Cómo estás usted? Me llamo Bishnu. Mucho gusto. Oh, वो स्पेनिश है. वो स्पेनिश में कमेंट करा है ना इसलिए. और अभी भी जस्ट चैटिंग सीन पे नहीं होता इसलिए आपने देखा नहीं. तो स्पेनिश में चैट थी तो मैंने स्पेनिश में ही जवाब दे दिया थोड़ा सा. स्किप फ्रॉम टू एनकोडिंग लैग. तो वीडियो एनकोड देख रहे हो 64% के आसपास मैक्सिमम जा रही है. तो एनकोडिंग रिलेटेड इशू भी नहीं होनी चाहिए. So like I'll monitor this data today a little bit and see if something happens like drastic that can like immediately notify me or give a hint about what's wrong. And it's not a regular issue, so like इतना हाई GPU यूज. यस 5 प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रही है और प्लस बहुत सारे विंडोज़ खुले हुए हैं. वीडियो प्ले हो रही है तीन. तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ. वो GPU से 60% नहीं है, वो एनकोडिंग यूसेज है. GPU यूसेज लगभग 70% क्रॉस कर रही है. ना वैसा नहीं होता. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यूटिलाइज करोगे, क्या क्या कर रहे हो, कितना क्वालिटी में स्ट्रीम कर रहे हो. बहुत कुछ पे डिपेंड करता है. कौन सा प्रीसेट यूज़ कर रहे हो, कितना बिट रेट पे स्ट्रीम कर रहे हो, कौन सा एनकोडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, ऑडियो बिट रेट कितना है, कौन सा फॉर्मेट पे एनकोडिंग हो रही है, सब कुछ. Let's I guess load something very complex, complex scene, and then I can see like how the system reacts to it. Okay, now I'll load something like very destructive which should like disturb the stream for a moment, but it's going to be helpful for my test, so I'm gonna do it. GPU temp क्यों इससे कमी तो रहे, ठीक ही तो है. आई मीन ऐसा ही रहता है नॉर्मली. बहुत हाई यूसेज पे 70 के आसपास जा सकता है.
बहुत देर तक अगर लगातार स्ट्रेस पे रखा तो, अदरवाइज इतना ही रहता है नॉर्मली, या इससे भी कम रहते हैं। So I'm loading a game right now and I'll see like what happens when I load an intensive game. I shouldn't have chosen this game, to be honest. Like, it will mess up all the stream layouts. But still, I guess. So I'll switch to like game scene to see what's happening, okay? Right now it's not streaming the game, so the usage is like very low. Currently the GPU usage is 53%. I'm launching another software right now. We will go like crazy with it today to test the limits, I guess. I know stream is lagging. I said it will lag. I'm tracking how much GPU CPU usage is happening when I'm doing all this to figure it out. So like, let me just launch the game and I'll just move around and do something, I guess. And by the way, it's like running at 60 fps because the monitor is like set to 60 Hz right now, so it will automatically switch between like 60 or more if I change the refresh rate of the monitor. Let me turn up the background music for this. So right now I am not seeing any dropped frame rates, even though like it should create some dropped frames. I'm like doing crazy stuff here. Still nothing, no issues. So it's very random, and I think it's probably happening with the server connection and something. I haven't played with keyboards, I don't know the controls. Okay, I have still the GPU usage is not enough to like cause any issues at all. Only 57% approximately. So I'm running 5 streams at 12,000 bitrate with like high presets and stuff, playing game, and it's still not enough to cause any issues. So it's very random. There's nothing I can do about it, I guess. What's the button to detective vision? Button for the detective vision. Let me just glide and like see. Sorry. So I'll glide through the city and then track the usage. Let's choose some busy area. I guess this would be nice.
4K में तो डेफिनेटली इशू होगी। ये 1440p चल रही है, 1080p GPU है। मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल यूसेज में कुछ होती है या नहीं। I don't know how to play with keyboard and mouse. I have no idea about the controls. I'm only clicking with mouse mostly. Who is this guy? He's just one man. I'll take this. स्ट्रीम लैग हो रहा है। आई नो, वही तो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लग रहा था कि मे बी मैं ओवरलोड कर रहा हूँ GPU CPU, बट क्लियरली नहीं हो रहा। तो ये इशू आई थिंक सर्वर रिलेटेड होगी, सर्वर या कनेक्शन रिलेटेड। हाउ डू आई थ्रो बैटरिंग? Okay, let me exit this. I love your spam comments. I read it like a spam. मैं बस ये फिर से एक स्पीड टेस्ट मैनुअली रन कर रहा हूँ, देखते हैं। तो मेरे तरफ से नहीं है इशू। मेरा पिंग लगभग 6 मिलीसेकंड का है, डाउनलोड स्पीड लगभग 77 Mbps, अपलोड स्पीड अभी टेस्ट हो रही है। Upload speed is also 70 Mbps. Let's disable Twitch stream and see what happens. Not Twitch, like Kick. So, but suddenly, like I was sending 30,000 kilobits per second. It's going crazy right now for some reason. ना कोई नेटवर्क इशू नहीं है। 70 Mbps की स्पीड है, पिंग 6 मिलीसेकंड की है। सर्वर रिलेटेड इशू है, क्योंकि डेली भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कल नहीं हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल अभी भी लाइक 12,000 बिट रेट के आसपास जा रही है नॉर्मली, बिना कोई दिक्कत के। बीच बीच में अपने आप कम हो जाती है। Let's look at the OBS stats again. Frame missed due to rendering lag, so this would be like related to GPU, and it's not enough to cause this much lag. Let me share the screen again. And now I have disabled Kick stream to like test. Maybe that will like ease up a little bit.
help the GPU to ease up a little bit. The GPU usage is still very low, but it's just a test to see if like that changes anything. Let's look at the GPU stats. So nothing is maxed out, as we can see over here. So if you look at the like maximum number, GPU temperature 51 degrees Celsius, hotspot temperature went up to 63, sorry. GPU core load 42%, video engine load like 69%, video encode usage 68%. So GPU bottleneck is not this here over here. GPU is perfect. Same goes for CPU. CPU is never loaded, to be honest. Let's check the CPU usage as well in terms of power and stuff. Okay, CPU usage is also fine. Even RAM is okay. So not related to hardware. It's definitely related to like server connection and internet connection. And even internet seems to be fine. So most probably server connection. But why am I getting like frames missed due to rendering lag? Because this happens when the GPU is unable to like render a frame or something. So maybe it's like, it has something to do with the speed. I don't know. Skipped frames due to encoding lag. So 0.1% and 0.2%. So it's not high. Most of the like frame drops are happening when trying to like connect to the server. GeForce experience. Okay. GeForce experience तो वो हो गया ना, आई थिंक बंद हो गया, मतलब क्या कहता है उसको, पुराना सॉफ्टवेयर है. और ये GPU रिलेटेड नहीं है, हमने टेस्ट कर ली बहुत. For a moment, the stream got completely disconnected, and I first time saw a disconnected issue. This happened for the first time right now while testing. So it's definitely related to network, and it doesn't happen all the time. And when I say network, it can be from both ends, from my end as well, and from the server
end as well. So if like all the platforms are lagging, then it would be like easy guess that the issue is happening on my end. But Twitch stream runs perfectly smoothly, so I don't think it's on my end. Plus I like test internet speed again and again, as I showed you guys. Every 30 minutes I check the internet speed daily. It runs automatically every day, and I haven't seen like any significant enough drop. And even now I checked like my Twitch stream right now. So the dashboard shows if any error happens, or like maybe if we are getting low bit rates and stuff. But I know like there's no error on Twitch. In fact, it is like saying, please lower the bitrate, please lower the bitrate, because it doesn't like bitrate over 8000 bitrate. Yeah, it's not having any issues at all. Twitch. This is only happening on YouTube. And right now it went to 0 again. So it's crazy. Twitch page are hi bro. I think I should like work on my stream scenes and stuff. Like, don't think about lags and stuff for the moment, at least. And I wanted to stream on my reaction channel today because I wanted to watch some YouTube videos. I'll probably do that. Like, maybe I think I should create the reaction scenes now and stop worrying about the lag, because I don't think I can do much about it. Like, it's not in my control. If it was like GPU or CPU, then I could like reduce the resolution or bitrate maybe, but that's not the issue, so can't do anything about the network connection. So it's not in my control. So let's not think about it. Let's create like maybe work on stream, maybe OBS, I guess. So I'll show you this data, all the data that I'm collecting maybe later on. Right now, I would like to focus on the task at hand, which is creating like some sort of scenes and stuff that I can like use while streaming on the gaming channel, reaction channel. And when I'll be streaming on the reaction channel, I will also do like I'll also stream on Kick at the same time. So when I'm watching some sort of content and reacting to the content, I'll use the reaction channel plus Twitch plus Kick. So 3 platforms. And we will test again maybe. But I don't think that will have any issues unless again network issues. But otherwise it should be fine. And the reason I'm telling you guys this is because I won't be streaming on this channel or the gaming channel when I'm watching some contents and stuff, to avoid obviously copyright strike and stuff, and also to be able to be respectable to the content creators, you know, original content creators. So I don't want to like completely copy everything. Then if right now if you are facing lag, then it's not because of live stream, because
Now I'm not seeing any lag over here. OBS report, there's no lag right now. When it happens, but right now it's showing 0%. I'm monitoring it consistently today. It went up to 10% max in the beginning. Rest of the time it was like about 3%, 9% and stuff. But mostly it stays like below 0.9%. It should be fine. But we'll keep testing it, I guess, every day, and then maybe try to figure it out. कुछ मजेदार करो, क्या मजेदार? मैं चाहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक जब हम यूट्यूब पे स्ट्रीम करेंगे रिएक्शन चैनल पे, एक मिनट में शेयर कर देता हूँ. So if anyone is watching, which I guess someone is watching, I have shared the link on Twitch and I'm going to pin it like minutes. So this is the channel link where I'll be like streaming the reaction videos, and I was like trying to do it today, but then my daily challenge, I guess, that creates some issues. But okay, I think what the hell, why I'm speaking English? There's no one watching right now in English. तो बेसिकली मैं मैं क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश कंटेंट भी देखने वाला हूँ, तो okay, so basically what I'll be doing is I'll watch some sort of contents, but I also want to like be able to take requests from the viewers at the same time. Like maybe they will share links and stuff, and I will automatically create a list of URLs and stuff, the shared URLs and stuff, and I should be able to like automatically shout out the videos basically, and automatically add links maybe on the description. So I'll create some sort of systems like that, basic scenes maybe. So yeah, that's my plan for the reaction channel, but for the moment being, like we'll stick with the basics, I guess, and then we'll move from there slowly. So I guess let's try to like create there's only one scene right now, it's just the camera. We can add like maybe we tried something, right? I forgot. Okay, React browser. Yeah, this is something we tried yesterday. Let me open something first to be able to like properly use it, to show you guys, I guess. What the hell? I got some weird recommendations on YouTube. This is not my primary channel, so I guess this is recommending trending videos and stuff. I don't watch this channel, so YouTube has no idea what I like to watch on this account. Some crazy videos are there. Let me find a suitable one.
Like for example, a music video. Now it might give me a copyright strike, but I'm willing to take a chance to like test it. So I'll switch to like React browser scene and we'll try to have a look at it. So this is the basic scene that we have right now. But obviously this is not enough. Like for example, let's say if you are watching something on YouTube, maybe, then we can like maybe play something like this. So it's just fine, but I need to create like better look and stuff. So let's try to modify it a little bit. So I don't think I should use like full window for the reactions. Maybe let's say this is the good enough size. So this should be able to like handle this stuff. We will add some dynamic background for now. Like let's keep this strike आ जाएगा. I know चलेगा, कोई बात नहीं है. आ रहा है, बस मैं इधर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो गया था इसलिए देख नहीं रहा था. I mean रिप्लाई नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो एक बेसिक सेटअप ये हो सकता है कि ये रहे और यहाँ नीचे चैट ऐड करना पड़ेगा. अगर हम, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम करते वक्त ही करने वाला हूँ, जो कि मेनली ट्विच पे होगी. Let's add chat if possible. Default chat should be fine, like for testing at least. Let's lock the browser scene for the moment being. And let's try to customize this. So clearly I need to like create a different chat source for this scene or reaction scenes. Or maybe they will work, I'm not so sure at the moment. So this is fine. How about I play my own song? This is like when we were kids. We recorded the song with our Nokia phone, the keypad phone, AMR audio, very low quality, but it was a fun time. Let me find it. So we never continued, so obviously there's not no views and stuff, only one video, and even the video is nothing but just images. Okay, let's switch to again the reaction scenes, and I don't have shortcuts for these scenes right now, so I have to create them. So the white border, I know, I'm not sure why the white border is there.
गिरते जा रहे बेवजह रास्तों पे I didn't realize that we used black background on this video. कुछ करने के लिए कुछ पा लिया कुछ खो दिया क्या ढूंढे हैं मगर रास्ते अंधेरों से भरे बेवजह बेमतलब क्यों डरे Let's try to like figure out why the white border is there. I think I'm using like crop, and this is not just the browser but the scene itself, like embedded scene. So that's probably one of the issues. Again, what I can do is like maybe add a different browser scene manually over here. कौन गाया है सॉन्ग को? मेरा सॉन्ग है ऑब्वियसली. गिटार मेरा कजिन बजा रहा है और बाकी सब मेरा है. Let's find something else to watch to test, I guess. I'm like afraid of like using a separate account, to be honest. I'm not sure like what things will be recommended and stuff, because when like I was trying to like find a YouTube video for this, like I saw a very adult content, to be honest. One video only, but it was too graphic to like show on this stream. I don't know why it wasn't like banned or something. It should be removed, right? Immediately. And it has millions of views. मेरे शोर क्यों दिया है? बताया था आई थिंक. I found a love for me, darling, this time running, follow my lead. In reaction channels, you guys will mostly see me reacting to music videos and music, to be honest, because like this is something that I love, to be honest. I'm very passionate about, like I like music a lot, so I'll probably stream mostly music stuff, react to music stuff, musical videos and stuff. Let's see one of my own video, I guess. By the way, I'm only playing this because I won't give myself copyright strike. That's the only reason. Like I don't want to like promote my own video right now. It's not because of that. I'm not trying to promote my own videos. इंस्टा का वीडियो यूज करो ना. मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता. वहाँ पे तो फिर रील्स टाइप की वीडियो होगी. मैं अभी तक ज़िंदगी में देखा नहीं. मैं उस तरह की वीडियोस ना देखना चाहता हूँ. उसके लिए मुझे मतलब मे बी मिलियंस कोई पे करे तो देख सकता हूँ मे बी. अदरवाइज
इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. What I was trying to say. Okay, let's go with the browser scene again. So this is one of my video that I created like very long time ago. Okay, so I haven't created a shortcut, like, so I forget and like go to like my main browser scene. This is the reaction scene. Okay, and I removed the black background to be able to like display the chat properly. So I'll add a different background over here. For the moment, I guess let it be. Let's add. Okay, since it is a browser and I'm using like 16:9 ratio, so if I crop it like right now, let me do it. So that crop should still be able to like show me the good amount of video without like ruining it. Okay, this should work, I think. Yeah, this is good enough. I don't need to like change the browser source. Let me find a background for this. Okay, you guys won't be able to see it. I was like worried about it. And I'm opening a lot of files and folders. Give me a moment, okay? Should I play the video? You can watch it. Was it time or discipline? We all have dreams. Some small, some big, some very simple, and some extraordinary. But if we all have these dreams in mind, a desire to be successful. The browser sound is not being recorded as far as I know. Or maybe it is recorded. Okay, it is being recorded. Then why only a few of us are really achieving all of it? And the rest are not? To be honest, it could be anything. There could be so many reasons for it. Media source. Maybe you don't have that passion for it. Or maybe you are making an excuse all the time instead of taking action. Make source visible. Whatever the reason is. In my observation, I have a lot of that backgrounds there's a downloaded over common here, reason but I'm among not sure us which that will we like hold fit accountable the for scene. not being successful or not being able to achieve our dreams. Time. But is that really the reason? Well, maybe. But all of us have equal amount of time, don't we? Some people are doing the same thing that you wish to do in the same amount of time, while you feel like that's not enough. Maybe not having time is not a reason, but an excuse. Maybe saying I don't have enough time I have a feels lot of very backgrounds, but relaxing I'm to you. unable to find them right now because I have too many folders. But how long? I think you already know why I'm talking about this at this point in time. Maybe you have already realized the same thing yourself. Maybe you never lack time, but discipline and the passion for your dreams. Let me check on the E Now drive. do remember this when everything gets back to normal again. Everyone has equal amount of time. How you use it sets you apart from others. ब्लैक बढ़िया है. हाँ, लेकिन एकदम ही डार्क है, कुछ डायनामिक होना चाहिए.
मेरे ही लाइव स्ट्रीम म्यूजिक रिकमेंड हो रहे हैं। मैं कुछ टेम्पररी सिचुएशन के लिए क्रिएट करता हूँ एक बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, बट बस मैंने कौन से फोल्डर पे रखा है मुझे याद नहीं है। तो अभी के लिए मैं एक वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर से एक ले रहा हूँ जस्ट टेस्ट के लिए। इसको लूप करेंगे, यूज हार्डवेयर डिकोडिंग व्हेन अवेलेबल। लेट्स गो। ये मैं पॉडकास्ट वाले वीडियोस में पीछे डालता था। इसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ब्लैक कलर का इमेज डाल सकते हैं, कलर या कुछ। ये म्यूज़िक सुना है, ये बहुत अच्छा है। मुझको COD खेलने का और एक रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। जो वो लोग म्यूज़िक डालते थे, जब भी वीकली या मंथली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो टाइम टू टाइम उनका जब भी अपडेट आता था तो एक न्यू म्यूज़िक के साथ आता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका म्यूज़िक बहुत बढ़िया होता था। तो ये म्यूज़िक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और उसको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, गेमिंग वाले चैनल पर। अच्छा म्यूज़िक है, मुझको इस टाइप की म्यूज़िक बहुत पसंद है। काम लेकिन बहुत मेलोडियस या बहुत यूनिक थोड़ा बहुत। इस केस में ऑब्वियसली वॉर लाइक है, बहुत अच्छा है। यहाँ नीचे का जो ब्लैंक एरिया है, हम यहाँ पे स्ट्रीम अलर्ट्स लगा सकते हैं। मेरे को सिर्फ म्यूजिक पसंद है। म्यूजिक बहुत बढ़िया है। आई थिंक ये बेसिक गुड इनफ सीन है मुझे स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक मैं इस सीन को इस्तेमाल कर सकता हूँ रिएक्शन वीडियो शुरू करने के लिए, और जैसे जैसे शुरू करेंगे तो काम करते करते ऑटोमेटिकली अपने आप मल्टीपल सीन्स बनाते जाऊँगा, ऐड करते जाऊँगा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ। वैसे इतने सारे चीज़ें जो हैं वो एक दिन का बना हुआ है नहीं। ये म्यूज़िक को भी मैं यूज़ करूँगा, आई थिंक मेरे फोल्डर पर डाल दूँगा, इसमें कोई वो नहीं आता कॉपीराइट, पर म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। बहुत टाइम हो गया पर मैंने गेम लॉन्च ही नहीं करी कभी। अभी भी शायद आती होगी, बहुत मस्त मस्त म्यूज़िक। अगर इसमें देखोगे तो मेरे पास वहाँ पे कॉइन भी है 500 जो दिखा रहा है, तो वो पेड वाला कॉइन होता है। तो मुझे कॉइन मिला था तो वो गेमिंग उसके तरफ से, क्योंकि मैं अच्छा खासा खेलता था। रैंक करने पे कुछ मिलता है, तो मैं आई थिंक सेकंड या ऐसा कुछ रैंक में पहुंच गया था। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से ही कांटेक्ट हुई थी और उन्होंने मुझको वो ऑफर करा था स्पॉन्सरशिप टाइप। तो बेसिकली उन्होंने बोला था कि वीडियो बनाओ और उसमें बात करनी है कि वो जो गन्स वगैरह स्किन सब मिलता है उसके बारे में बात करना था, बट मैंने यूज़ नहीं करा कभी।
खेलता था फ्री में फ्री फायर, बट मैंने बहुत पैसा लगाया, बट अभी छोड़ चुका हूँ ना। मैं पैसा नहीं लगाता, बल्कि मेरे पास जो गेम्स है ज़्यादातर फ्री है, फ्री में मिले हुए गेम्स हैं, और प्लस जो फ्री में नहीं है वो भी मतलब लोएस्ट प्राइस पे ख़रीदी हुई है। प्राइस ट्रैकिंग करता हूँ, इसी चीज़ अभी बढ़िया नहीं लग रहा। होता है, ऐसा टाइम भी आता है लाइफ में। ये क्या है? ये बंदा कंट्रोवर्सी में है कुछ, राइट? पता नहीं। 2023 हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। मैं भूल गया इसका नाम, मैं देखता था पहले। हाँ, टेक बर्नर। बहुत टाइम से देखा नहीं है। हम एक ऐसी स्पेस में घुसने जा रहे हैं जहां पे पहले जितनी भी कंपनीज हैं सारी $1 बिलियन कंपनीज हैं ना, हमको उनसे बेटर प्रोडक्ट बनाना है। नॉट पॉसिबल ब्रो। हाँ, याद आ गया वैसे, मैं सोच रहा था भाई, वो ये बंदा कहीं सुनेला सुनेला लगता है वाला सिचुएशन था मेरे माइंड में, मतलब चल रहा था। ये तो कहीं सुनेला लगता है चल रहा था। इस प्रोडक्ट को बनाने की जर्नी मेरा सबसे स्ट्रेसफुल टाइम था। मेरे को ना रात में नींद नहीं आ रही। इस स्टेट में तो लॉन्च करने लायक नहीं है। तब फ्रस्ट्रेटेड भी है ना। बट पॉइंट यही है कि इस तरह से मान लो मैं अगर यूट्यूब पे किसी वीडियो का रिएक्ट करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक मैं सिर्फ ऐसा नहीं करूँगा कि मतलब किसी और का वीडियो लेके बस है करके मतलब वीडियो डाल दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कुछ लाइक मे बी कुछ फीडबैक्स हो या कुछ होनी चाहिए बेसिकली। ऐसा बहुत बेसिक सा नहीं होना चाहिए कि कुछ किया ही नहीं बस डाल दी वीडियो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक चैनल है, ठीक है, मेरे लाइफ में जैसा मैंने बताया कि एंटरटेनमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं कुछ चैनल्स मतलब मैं इसलिए कॉमेडी बहुत देखता हूँ, क्योंकि बस वही एक लाइफ में होती है जो एंटरटेनमेंट के नाम पे है। जैसे ये अभिषेक उपमन्यु, इसको मुझे पता है, मैं देखता हूँ। तो इस साल में ऑब्वियसली मेरे ब्राउज़र कुकी वगैरह की वजह से कुछ वीडियोस जो रिकमेंडेड आ रहे हैं वो मेरे मेन अकाउंट जैसे ही हैं। एक चैनल है, अब ये बहुत यहाँ पे गंदा गंदा जोक आता है बट मैं देखता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मैं इस चैनल कुछ नहीं करूँगा, बट ये चैनल देखता था मैं, ठीक है। ये देख सकते हो कि इस अकाउंट से नहीं देखता, तो एक भी वीडियो देखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बट एक्चुअली में सारे वीडियोस देखे मैंने। तो स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो आई थी तब से देख रहा था। तो और ये लोग मतलब कॉपीराइट नहीं देते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम से, जैसे अभी ये 4 आवर हुई है, आई थिंक ये वीडियो आने के बाद ही मुझे लगा कि रिएक्शन वाले क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ इनको। तो हाँ, इसलिए मैंने मतलब अभी ये क्रिएट करने वाला था रिएक्शन विंडो, क्योंकि मैं इनको देखता हूँ, तो सोचा कि बना लेते हैं करके। तो ये मैं देखता हूँ, और इन्हीं का फिर पुराना वाला बंदा भी है, पुराना वाला ग्रुप मतलब छोड़ के चला गया था, तो उनका भी न्यू चैनल है, तो उनको अभी आई थिंक 2 वीडियो आया हुआ है। ये रहा, तो ये वही टीम का पार्ट है। तो वही, तो मैं कुछ चैनल्स देखता हूँ, और मतलब कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कॉपीराइट वगैरह नहीं देते हैं, तो उनको ट्राई कर सकते हैं लाइव वॉचिंग में। और बाकी जितना भी देखूँगा वो मोस्टली कुछ प्रोडक्टिव वॉइस रहेगी। फॉर एग्जांपल हम डिस्कशन करेंगे या ऐसा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट्री टाइप बेसिकली, है ना, कि सिर्फ ऐसा देखा है बैठ के देख रहा हूँ और अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ डिस्कशन होगी, कुछ फीडबैक्स होंगे वगैरह वगैरह, क्रिटिसिज्म। और क्योंकि
यूट्यूब पे ही देख रहा होगा तो एज एन ऑडियंस मे बी अगर कोई सबमिट करना चाहता है अपना वीडियो खुद का बनाया हुआ कि मेरा वीडियो देख लो, तो वो अपना URL सबमिट करेगा और मैं उसका वीडियो देखूंगा एंड फीडबैक दूंगा। तो मेरा उस टाइप का प्लान है। तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि ये मुझे पसंद आया, ये नहीं आया, वो खुद डिसाइड कर सकता है उसको क्या करना है नहीं करना है। मूवी का रिव्यू बट मैं देख ही नहीं पाता यार। एक टाइम था जब मतलब पूरा वेब सीरीज़ देखता था, क्योंकि वेब सीरीज़ में मुझे वो एक एक एपिसोड वाला जो आता है वो पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता था, एक ही दिन में ख़त्म कर देता था। वेट करता था कि पूरा सारा एपिसोड आ जाए, उसके बाद एक ही दिन में ख़त्म कर देता था। और अभी एक ऐसा टाइम है कि एक ही मूवी देखना हो तो उसको भी मतलब महीने भर में थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ता है। तो मतलब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है अभी। जैसे मेरे विश लिस्ट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है बट मेरे पास टाइम ही नहीं है देखने के लिए। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है बाय द वे कि अगर मैं मतलब रिएक्शन चैनल के साथ देख रहा हूँ तो एटलीस्ट इतना यूजलेस फील नहीं होगा। हाँ मुझे अभी ऐसा ही है। हाँ लगभग सबका ऐसा ही हो जाता है एक टाइम के बाद, टाइम ही नहीं मिलता देखने के लिए कुछ भी। तो बस वही है, आज को भी ऐसे रिएक्शन चैनल का सेटअप क्रिएट करना था। एक बेसिक तो बनी गई और 2-3 सीन बनाऊंगा और उसके बाद आई गेस नेक्स्ट टाइम से रिएक्शन चैनल पे स्ट्रीम करेंगे। तो मैं डेली स्ट्रीम वाला चैलेंज तो कंटिन्यू करूँगा बट हर दिन इसी चैनल पे स्ट्रीम नहीं होगी। मतलब कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दिन रिएक्शन वाले कंटेंट देख रहा हूँ तो वो इस चैनल पे नहीं करने वाला हूँ और गेमिंग चैनल पे भी नहीं होगी। तो उस दिन मोनेटाइज मोड्स वाले यूट्यूब चैनल भी होगी और प्लस ट्विच और प्लस किक। तो अगर किसी दिन नहीं दिख रहा हूँ मैं लाइव में तो चांसेस है कि मैं ट्विच पे लाइव कर रहा हूँ। तो बस वही है। आई थिंक ये एंड नोट के लिए सही रहेगा एंड आज को थिंक हम यहाँ पे थोड़ा देर में एंड कर देंगे क्योंकि 1 आवर मेरा क्रॉस हो गया है। और 1 आवर ही टारगेट रहेगा मेरा डेली का, तो मैं मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। 1 आवर टारगेट रहेगा बट हाँ ज़रूरत पड़े तो हम लोग इम्प्रूव मतलब थोड़ा क्रॉस करेंगे। और बाय द वे अगर मैं क्योंकि अगर मैं और कुछ सिचुएशन में मैं सिर्फ ट्विच और किक पे स्ट्रीम करूँगा तो उस सिचुएशन में अगर मैं मतलब मस्त कॉपीराइट के बिना सोचे स्ट्रीम कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में उतना वो आता नहीं है। क्योंकि जैसे वहाँ पे मैं सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले कर सकता हूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, यूट्यूब पे नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ स्ट्रीम्स में एटलीस्ट डेली स्ट्रीम आई थिंक मैं ट्विच और किक पे ही करूँगा। यूट्यूब पे डेली स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मतलब चाहो तो कर सकता हूँ ऑब्वियसली बट यूट्यूब का खुद ही का रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से नहीं कर पाऊँगा। यूट्यूब करना अलाउ नहीं करेगा हर तरह के स्ट्रीम्स। और एक ही दिन में डिफरेंट स्ट्रीम पहले कर लेता था बट अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मतलब अलग अलग स्ट्रीम करूँ। फॉर एग्जांपल जब स्टार्टिंग में करता था तो गेमिंग चैनल पे अलग से स्ट्रीम होती थी संडे को, तो हर संडे को एटलीस्ट 2 स्ट्रीम करता था मैं अलग अलग, और दोनों लगभग 1 आवर के ऊपर ही होते थे, जिसमें से गेमिंग चैनल तो कभी भी 3 आवर्स स्ट्रीम होती थी। तो उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैनेज करना पड़ेगा जैसे तैसे, देखते हैं क्या होगा। ओके आज को एंड करते हैं। हाँ मिलते हैं कल। प्रॉब्ली मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर अगर आपको यूट्यूब पे मैं इस चैनल पे या गेमिंग चैनल पे नहीं मिलता हूँ तो चांसेस है कि मैं ट्विच और किक पे स्ट्रीम कर रहा हूँ और मे बी मोनेटाइज मोड चैनल पे, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मोनेटाइज कभी नहीं करने वाला हूँ मैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, I'll see you tomorrow and please keep learning, keep growing. I'm gonna use this tagline again. It's like from my Instagram. I used to do it. Have a sweet dreams. Bye bye.